हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो अभी बज रहे हैं हमारे यहाँ पर सुबह के 11। और जब सुबह के 11 बज रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा मॉरिशस का कटरबोन मार्केट एक्सप्लोर करा जाए। ये वीडियो आज इस ईयर की यानी कि 2021 की का आखिरी ब्लॉग रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आज तो आखिरी दिन है, यानी कि आज है 31 दिसंबर। तो आज होगा इस ईयर का 2021 का आखिरी दिन, तो आखिरी ब्लॉग। तो चलते हैं और कटरबोन के मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। मॉरिशस के मैंगो ट्री, एक ही पेड़ पर कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं। गुच्छे में मैंगो लगे हुए हैं गाइस। Three piece 400. Yeah. Three piece 100 rupees. Okay, 3 piece 100 rupees. Any Any free, yeah. Yeah. फ्रेश में लो, फ्रेश में। स्मेल। Beautiful young lady. Huh? What's about this one? Hey, you're from India? Yes. You're studying here or something? No, my husband is working here. Oh, yeah. So Huh? for how long you have Mauritius? We came just now only in December. Okay, so you came here on a quick vacation? Yes, for a vacation. Oh, yeah. Yes, for a vacation.
Yeah, doctor. I'm a teacher. Yes, yes, what you teach? Yes. What you teach? I teach maths. Oh, mathematics. Yes, mathematics. Additional mathematics. No. Huh? You don't teach additional math. No, no, no. Oh, only mathematics for primary or secondary school? For secondary school. Oh, yeah, yeah. Okay, give these three. Oh, yeah, yeah. Only free.
सेल्फी वो कह रहे हैं कि मैं सेल्फी ले रही हूँ, अब उन्हें क्या पता कि मैं सेल्फी नहीं ले रही हूँ, मैं वीडियो ही शूट कर रही हूँ। आजकल के लोग। हाँ। तो ये था कटर बोन के मार्केट का एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ हो रही है। तो धूप बहुत तेज़ होने की वजह से हम पूरा मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाए आज। तो दूसरे व्लॉग में पूरा मार्केट एक्सप्लोर हो जाएगा। बाकी क्योंकि ये हमारा वॉकिंग टूर था तो हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इस वजह से फिर हम बैक टू होम जा रहे हैं। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।